Hello everyone, this is Harkirat Singh Sekho from Your Education and I welcome each and every one of you in this amazing live video. And आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइल्स स्पीकिंग के बारे में। एंड चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी लाइव वीडियोस लेकर आते रहते हैं, बातें करेंगे बहुत सारी। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सवाल आप मुझे पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में सवाल है रिलेटेड टू आईएलटीएस स्पीकिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं आईएलटीएस स्पीकिंग के ऊपर। आज का पूरा सेशन रहेगा आईएलटीएस स्पीकिंग के ऊपर। तो अपने सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत मजा आने वाला है, जुड़े रहिए आज के सेशन में। क्यू कार्ड्स की बात करूंगा, पार्ट 1 की बात करूंगा। सो वी विल बी talking about all the things that how you can improve your IELTS speaking and how you can get good band scores. So if you want to ask any questions related to speaking, that also you can do in the comment section. And this session is going to be about IELTS speaking test. So बहुत सारे ऐसे students हैं जिनको स्पीकिंग में कई सारे डाउट्स होते हैं, तो आई ट्राई टू सॉल्व मेनी डाउट्स एज मच एज यू वांट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हो, मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई वुड लव टू आंसर ईच एंड एवरीवन। हर बच्चे का आंसर करना मैं चाहूंगा, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर अपने सवाल पूछिए। आई होप माई वॉइस इज रियली क्लियर। वेरी गुड इवनिंग हरप्रीत कौर। तो आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वी विल स्टार्ट द सेशन in just a couple of minutes when we can do it. Okay, so the question from Kevin: when examiner asks, tell about your city, therefore how we tell in a unique way. See, simply you can tell in a unique way whenever you want, but I would always suggest you to keep your speaking simple. The most important part in the IELTS speaking test is your language, your speaking skills, your grammar, and these kind of things are the more important things. If you want to make it unique, like you need to make something really special. Like when they say, where are you from? Then which city are you from? And then you can say, I come from a beautiful city named this. And what is the most beautiful thing in that city? That also you can mention while you give your speaking test. So you can do these things, right? Yeah, Geeta Roda, I have already given prediction of 21st of May on my channel. You can always go there and watch those videos. Darshan, I have my speaking tomorrow. All the very best, Darshan. I hope you get amazing band scores with the help of Your Education and our videos. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, you can always ask me in the comment section. We will start the session. कुछ क्यू कार्ड्स होंगे जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो अगर आपके कोई भी सवाल है रिलेटेड टू आईएलटीएस इमिग्रेशन के, आपके कोई भी मन में सवाल है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम को 6 बजे के अराउंड हम ये सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। वेरी गुड इवनिंग गुरमुख जी, वेरी गुड इवनिंग। काइंडली शेयर दिस वीडियो अपने आइल्स क्लासमेट्स के साथ, जो आपके साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिए। हम वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी। बेसिकली हम ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स के साथ हर रोज इंटरेक्ट करेंगे, हमारे लाइव सेशंस करेंगे, हर रोज शाम को करेंगे। जब सारे के सारे बच्चे फ्री हो जाते हैं तभी हम ये सेशंस करेंगे। सो यू कैन गेन मोर थिंग्स। आपके सवाल लूंगा, 1-to-1 सवाल लूंगा, ड्यूरिंग द सेशन भी सवाल लूंगा, आपको क्यू कार्ड्स बोल के भी दिखाऊंगा किस तरीके से यू कैन स्पीक good cue cards and the way you have to speak in English in front of your examiner. We will be discussing about that as well. So be with me in this session. आप जुड़े रहिए इस सेशन में. Give me some time to connect with more people and then we will start this session as soon as possible. And if you have till then, if you have any kind of questions in your mind कि मैं ये चीज़ मुझे doubt है, how to speak cue card or what to speak in a cue card and how you can generate more content and these kind of things, like I can always answer you. So you can always ask me in the comment section. Gomat Vishal, very good evening. Yeah, very good evening, Ji. All right. So we have a speaking you told that in the video you're going to learn. Yes, we will be live for that, but today we are not live for that. We will be doing things for speaking test. Very good evening, Kushman Preet. So any questions people you have on the speaking test or IELTS or immigration, I would love to answer you. हर बच्चे का मैं आंसर जरूर करूंगा. So kindly comment your questions and then we are going to talk about it. So for the whatever question you have in mind, you can always ask.
सो लेट्स स्टार्ट. मैं क्यू कार्ड्स जो भी करेंगे आज हम, उनका जो टॉपिक होगा उसको कमेंट में लिखूंगा. आपको दिखेगा कि मैं उसको कमेंट में लिख रहा हूँ. देन यू कैन ऑलवेज सी दी कमेंट एंड आपको क्यू कार्ड का टॉपिक पता चलेगा. फिर मैं आपको ट्राई करूंगा कि वो क्यू कार्ड बोल के भी दिखाऊं, कंटेंट को डिस्कस करेंगे एंड विल आई विल ट्राई टू डू. सर प्लीज क्लियर माय डाउट. कल मेरी स्पीकिंग थी तो मुझे क्यू कार्ड आया क्या? राहुल शर्मा प्लीज गो हेड, मुझे बताइए कि आपको क्या क्यू कार्ड आया तो वी कैन टॉक देयर. गीत अरोड़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया नाउ डेज गैप इज नॉट एक्सेप्टेबल. जितना कम से कम गैप हो उतना ही अच्छा आपके आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में. सो ट्राई दैट कि आपका गैप ना ही हो. दैट इज मच 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 बेटर. राइट. So any sort of questions you have, you can always ask me in the comment section. Let's start. मैं अपना सबसे पहला क्यू कार्ड will do describe your favorite social media site. इस क्यू कार्ड को सबसे पहले मैं comment section में लिखूंगा. देन आप इस क्यू कार्ड को देखिए, फिर हम इसको मैं आपको बोल के दिखाऊंगा. देन यू गिव मी द रिव्यूज दैट हाउ इफ यू लाइक द आंसर्स और नॉट. Describe your favorite social media site. That's the first question that we are going to get. Very good evening, Kiran Jot. Very good evening. So we're gonna have these questions. Describe your favorite social media site. That's the first cue card, and you should say what is your favorite social media site, why, what do you use it for, how long you have been using social media, does the side affect you mentally. So you can answer these kind of questions when you're talking about social media. So let's start the answer. The answer would be like, मैं आपको पूरा का पूरा आंसर आपको बोल के दिखाऊंगा. You have to tell me that if you like the session. अगर आपको हमारा मेरा जो आंसर होगा पसंद आएगा तभी भी बताना है. अगर आपको मेरा आंसर पसंद नहीं आता वो भी बताना है. यू कैन टेल मी माय मिस्टेक्स की वेयर आई शुड इम्प्रूव, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अच्छा आपको क्यू कार्ड बोल के दिखाऊं. द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब योर फेवरेट सोशल मीडिया साइट. इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. आपको बने रहना आज की वीडियो में, दो अपने दोस्तों के साथ आज की वीडियो को शेयर करना है, सो वी कैन फिगर आउट डिफरेंट थिंग्स एंड इन पॉजिटिव मैनर, राइट? So let's start. Describe your favorite social media site. Social media has taken over people's life now. All individuals post their private lives online, either to spite someone or to just show off sometimes. Social media was created for a good purpose, but like they say, when the use of a thing is not known, abuse is possible. I will be talking about one of the favorite social media websites that I love to use. One of my favorite sites is Facebook. I have had Facebook account for a long time now, and it was the first social media platform I've ever used. I use Facebook to connect with my friends, present friends, past friends, and the friends that I can make, and also meet many more people on Facebook, and from different categories, different businesses, different niches. Sometimes I check people's newsfeed, and sometimes I upload pictures. Facebook is a messaging channel to get talk to your friends without having to worry about the airtime. I have been on Facebook like around 12 years. Sometimes there are more videos I have stumbled on having left traumatized for weeks. Sometimes I have watched educational videos that challenge me to become better. I am always careful about the kind of videos I watch on social media. Social media sites are good, but deniers have misused them. What you make out of social media is what matters. So this is the end of the cue card. I have concluded it all. Akveer Kaur, very good job. Thank you so much, Akveer. Thank you so much. Hi, Prabjot Kaur, Simran Gill. Very good evening. All right. So if you have any kind of questions, you can always ask me in the comment section. We will be doing more cue cards, so you can always ask me if you have any sort of doubt that you can ask in the comment section itself. Any questions, people? Any questions that you have in your mind, you can always ask me. Thank you, Prabjot. Okay, no worries, Rahul Sharma. Let me check. आपने लिखा describe a person who do job and useful for society. मैंने उसके ऊपर सर बोला कि
मेरा नेबर है वो सोशल वर्कर है एंड अपनी एनजीओ रन कर रहा है, नीडी पीपल की हेल्प करता है। यस, योर कंटेंट इज गुड, बट अब मैटर करता है। अब आप बोलोगे मैंने ये कंटेंट लिखा है और उसके इसमें मेरे बैंड स्कोर क्या आएंगे जब मैंने ये कंटेंट बोला एग्जामिनर के सामने। सो दैट इज व्हाट आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ, बिकॉज आई नीड टू नो योर ग्रामर लेवल, आई नीड टू योर प्रोनाउंसिएशन लेवल, योर फ्लुएंसी लेवल। क्योंकि एग्जाम में जब आप स्पीकिंग देने जा रहे हो, जब आप स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेंट मैटर नहीं करता। इट व्हाट मैटर्स इज योर ग्रामर, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड मेनी मोर थिंग्स। सो बहुत सारी ऐसी चीजों को मिलके आपका बैंड स्कोर मिलता है। यू कैन नॉट से कि आपकी सिर्फ एक आइडिया अच्छा है, आपने बोला अच्छा है तो आप अच्छे स्कोर लोगे। यस, डेफिनेटली आई लाइक योर आइडिया, द वे यू हैव रिटन इट और द वे यू हैव मेड इट आउट, बट टू इम्प्रूव योर स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको या अच्छे स्कोर्स लेने के लिए यू नीड टू हैव गुड ग्रामर skills, you need to have good fluency skills, you need to have good practical confidence, and you need to have good vocabulary. A very good evening Nishu Kanda ji. Any questions people? अगर आपके मन में कोई भी सवाल है please let me know, otherwise we'll move to the next cue card that we are going to do. हम आगे चलेंगे, 5 से 10 क्यू कार्ड आज करेंगे that can be useful to you people in your exams, right? Okay, very important cue card. I'll just write it down in the comment section. No worries, Rahul ji, no worries. Okay, how to cope up with nervousness while speaking. So if you want to cope up with nervousness, you all you need to do is to practice more. So if you practice speaking with someone, like on a daily basis you speak with someone or you communicate on daily basis over the call or over the conversation, so it is always going to help you in your speaking test. It's going to bring about a positive change in your life. So it not only in speaking but also in your life, because when you speak good English, when you speak in very confidently, it brings out very good value to your life and the person you're talking to. So to bring out confidence and remove nervousness, you should always practice. The more you practice, the more you learn. So the next cue card that we are going to do is describe a time when a family member asked you for your help. Now you think of your ideas, आप अपनी ideas के बारे में सोचिए, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बोल के दिखाऊंगा आज का क्यू कार्ड जो भी है। Describe a time when a family member asked you for your help. I can see your cue cards, I can see your comments on my screen. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है related to cue card, speaking, IELTS या immigration, you can always ask me in the comment section. All right, so I'll start speaking the cue card and then you let me know the reviews. Having a family is like having clothes to wear. Families can either make you or mar you. I love all my family members in one or the other way. I will talk about a family member that once asked for my help. It was about 3 years ago. I went to visit my uncle for Christmas. I love to go to his place because I always come back with lots of goodies. Around that time, his wife was pregnant and with the second child. She had delicate pregnancy. I spent about a week with them. One day, I was to go back Delhi. She went into labor. My uncle had to take her to hospital. He needed my support to stay with my niece at home. I wanted to go to Delhi that day, but seeing the situation, I agreed to help him. He took her to the hospital, and I stayed with my niece till they came home from the hospital. I helped prepare some dishes after he called to tell me my aunt had put on bed and took it to the hospital for them. It took a week for them to come back from the hospital, though it was very stressful as my niece was a handful and naughty. But I enjoyed every moment with him. I was also happy to be one of the first people to see baby James. Lending a helping hand to not only your family but also those around you goes a long way to show how kind hearted and affectionate one is. So that is the way I speak this cue card. Thank you, GS Global, IELTS and Immigration. Thank you so much. Manveer Brad, very good evening, Manveer Brad ji. Any questions, people? आप मुझे रिव्यूज दोगे कि आपको क्यू कार्ड कैसा लग रहा है, एंड उसके बाद हम अगले क्यू कार्ड के ऊपर जाएंगे. अगर किसी भी क्यू कार्ड के अंदर आपको कोई सवाल आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सर. बस यही डाउट था मुझे कि मैं आइडिया सही बोल के आया हूँ या नहीं, बाकी ग्रामेटिकली प्रॉब्लम्स नहीं थी. या द आइडिया इज वेरी गुड, नो वरीज.
Any questions people? अगर आपको कोई भी सवाल है on the last cue card I have spoken, you can just ask me that. कल हम करने वाले हैं रीडिंग की क्लास, तो बी रेडी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसके लिए रीडिंग को क्लास जरूर ज्वाइन करना है हर बच्चे ने. Any other questions or we'll move to the third cue card of the day. Important cue cards that we are going to do. Any questions that you have? Good evening, Satvir Gill. Okay, the next cue card that we are going to practice. It's describe a time when you needed to use your imagination. Describe a time when you needed to use your imagination. Any questions on this? Describe a time when you needed to use your imagination. Describe a time when you needed to use your imagination. When was it? What did you need to use your imagination for? How difficult or easy it was? Explain how you felt about it. These will be the questions. The question is describe a time when you needed to use your imagination. Very good evening, Rajdeep. और एनी क्वेश्चंस? नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक दिस क्यू कार्ड. मैं अभी ये क्यू कार्ड बोलने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है. अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप वो डाउट मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो आई विल क्लियर योर डाउट. मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपका जो भी डाउट होगा. तो यू नीड टू लिसन टू मी थॉरोली. आपको अच्छे से मुझे सुनना है, समझना है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आई स्पीक दिस क्यू कार्ड. ऑलराइट. All right. It is really good to have an imaginative mind. There is a way you always fit a picture to any description. It happened to be a happy person that uses imagination almost all the time. I will talk about one of those times I used my imagination. It was when I was in college. One of the major courses I studied was English. My teacher divided us into groups and I asked us to write an essay. He said it has to be fictional, and that meant to we are bringing up a story out of nothing. It meant we had to make up a story with our imagination, which sounded like fun because most of the novels where we read are fictional. They are just fragments of person's imagination. It was easy for us because everyone that was in my group was a reader of some sort. And a reader always has an imaginative mind. So we gathered and picked out the storyline. Everybody brought different ideas, and we were able to make up an essay. It felt so good to be able to use my imagination to write something really good and positive. By the time we submitted our essay, was marked, and we got an A and automatically passed the course. I was so happy and joyful. Well, in every area we find ourselves, we should always try to put our minds to the test. You can imagine the outcomes of the decision or business. Nobody can tell I might come through. Always be positive, not negative. So that's the way we answer this. Very good evening, Jashanpreet Kaur. Very good evening, Piyush. So kindly ask your questions. अगर आपको कोई भी सवाल है related to this cue card, you can always ask me. फिर अगले क्यू कार्ड पे चलेंगे. We'll discuss more cue cards today. वेरी गुड इवनिंग जस्सी जी. अगर आपके मन में कोई भी और सवाल है मुझे जरूर पूछिए. आई वुड लव टू हेल्प. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए. हमने 3 क्यू कार्ड आज कर लिए हैं. पहला क्यू कार्ड था describe your favorite social media site. Second was describe a time when a family member asked you for your help. Third was describe a time when you needed to use your imagination. 3 क्यू कार्ड कर लिए. 2 और क्यू कार्ड करेंगे बिफोर वी एंड दिस लाइव वीडियो. तो बने रहिए फॉर द नेक्स्ट 2 क्यू कार्ड्स. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है रिलेटेड टू आइल्स के रिलेटेड, कोई भी सवाल है आपके मन में, वो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लो. आपको अगला क्यू कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
All right, we will move to the next cue card, that is talk about a time when you had to learn a new language. It's a very important question. Talk about a time when you had to learn a new language. उस समय की बात कीजिए जब आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ी, जब आपको सीखनी पड़ी या आपने सीखनी थी. My sound is good. Talk about a time when you had to learn a new language. So this is the question. ये है आज का सवाल. Fourth cue card of the day. Talk about a time when you had to learn a new language. इसको मैं बोल के दिखाऊंगा आपको. देखो, you need to participate. Basically what happens here is you don't participate, you don't ask questions. I always say that a person becomes something that he or she asks. So आप वही बनोगे जो सवाल आप एक दूसरे को पूछोगे. So start asking questions. जितने ज्यादा questions पूछोगे उतना ही ज्यादा grow करोगे. So it will help you. Ask questions in the comment section. अगर आपको speaking अच्छी लग रही है मेरी, जो मैं आपको क्यू कार्ड्स बोल के दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर भी रिव्यूज दीजिए. क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और जो बुरा लगा वो भी बताइए, so that even I can improve. So human is being made up like that. There is always an opportunity to learn, right? So I want to learn as much as possible. So always be there, ask questions, be active in the comment section. Whosoever you are, be very active in the comment section. That's the very important thing. All right, let's start the cue card. I have talk about a time when you had to learn a new language. Right, let's start. I'm going to speak this. Kindly actively tell me in the comment section that if you like the क्यू कार्ड और नॉट, अगर मेरी स्पीकिंग आपको अच्छी लगी या नहीं. राइट. I love foreign language, though there are some that sound like coherent words without meaning, while others are sweet and melodious to ears. I was in Africa. We went for a family vacation in South Africa. It is a very beautiful country with beautiful people. Everybody in my family was present, both my aunts, uncles, cousins, and everyone else. It was like a reunion in the form of vacation. We stayed at our resort and we met different people speaking different languages and especially Swahili. As they spoke, it was so interesting to hear to communicate with each other. I was so interested and I asked one of the stewards to teach me common greetings in Swahili. So they taught me, and I was proud to be able to communicate with them. It was tongue twisting at first, but I got it at the end and greeted a few people with it. I was proud of myself for learning a few greetings within a short period of time. I add it to the list of my achievements. Learning foreign languages is fun and entertaining. It builds orientation to other cultures, and it also develops your skills to be better than what you are. It helps you to know about more cultures, it helps you to achieve more accomplishments in different countries. You explore yourself, you get more and bigger exposure, and that's the benefit. That's the end of my cue card. I hope you like this, the way I spoke this cue card. This was the fourth cue card of the day. चौथा क्यू कार्ड था आज का हमारा. इसके बाद हम एक क्यू कार्ड और करेंगे. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए. चैनल को सब्सक्राइब करिए. दबस जाट. गुड नाइट सर. वेरी गुड नाइट जी. इतनी जल्दी सो रहे हो. We'll move to the last cue card in 1 minute. So kindly ask questions अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो. If you have any, Jashanpreet, very nice, sir. Thank you, Jashanpreet. Samanpreet, very good evening, Samanji. All right. Any questions? We can do different questions. Okay, we'll do this question. It's a very simple. Last question है आज का. Last क्यू कार्ड है आज का. तो बी वेरी केयरफुल. हम इसके बाद लाइव वीडियो एंड कर देंगे. अगर आपके सवाल है वो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. थैंक यू समन. थैंक यू जशनप्रीत. हर बच्चा मुझे रिव्यू जरूर दे कि आपको कैसे लग रही है हमारी क्लास और कैसी आपको लग रही है मेरी स्पीकिंग. सो इट कैन हेल्प मी ईदर मोटिवेट और इम्प्रूव.
द लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक अ स्टोरी ऑफ एनी क्यू कार्ड। हर क्यू कार्ड की स्टोरी ऑलरेडी होती है। देखो जो भी क्यू कार्ड्स आपको पूछे जाते हैं आइल्स के एग्जाम में, वो इस तरीके के क्यू कार्ड डिजाइन किए होते हैं कि आपको ऑलरेडी पता हो। अगर आपको आप याद करो, अगर आपको किसी भी क्यू कार्ड का कोई भी टॉपिक ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी टॉपिक लोगे, वो उस टॉपिक के ऊपर आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलने को कहा जाए तो आप बड़ी आसानी से बोल दोगे, राइट। आपको 1 मिनट लगे उसमें बातें करने के, मतलब हमारे तो यू कैन क्रिएट एवरीथिंग। आई डोंट नो व्हाट इज न्यू क्यू कार्ड, जशनप्रीत कौर, मुझे पता ही नहीं है न्यू क्यू कार्ड क्यू क्या होते हैं। मेरे लिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अंदर से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। गुरप्रीत कौर, लाइव क्लास विल स्टार्ट्स एट 6 PM इन द इवनिंग। शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। ट्राई करेंगे थोड़ा सा इसको और लेट करने की, ताकि हर बच्चा घर पे पहुंच जाए अपने, मतलब जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करते हैं। मोगा एंड धर्मकोट में हमारा ऑफिस है। इफ यू वांट टू स्टडी देयर, आप वहां पे जाके भी पढ़ाई कर सकते हो ऑफलाइन हमारे प्रोफेशनल टीचर्स से, राइट। तो शाम को 6 बजे हम हर रोज आप लोगों के साथ लाइव करते हैं, तो बी रेडी विद दैट फॉर अ टाइम। उसके बाद हम जो भी टाइमिंग होगी, अगर अपडेट आती है कोई भी, अगर चेंजेस आते हैं कुछ भी, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा। लास्ट क्यू कार्ड होगा आज के दिन का, बने रहना है मेरे साथ। इस यहाँ तक अगर आप आए हो, बने रहना है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना हर एक बच्चा। अगर आपको मेरी स्पीकिंग अच्छी लगती है, मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ, अगर आपको मेरी स्पीकिंग अच्छी लग रही है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कैसे हमारे स्पीकिंग सेशंस लग रहे हैं, या हमारे ये लाइव वीडियोस का कंसेप्ट आपको कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि आप लोगों को हमारा कंसेप्ट पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाई कराने का तरीका पसंद आ रहा है, सो दैट वी कैन डू मोर सच काइंड ऑफ सेशंस। अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा तो फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि हम उन चीजों में इंप्रूवमेंट कर पाए, हम आपसे बात कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए कि आपको हमारे लाइव सेशंस क्यों अच्छे नहीं लगते। जसकरण सिंह, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू बलकरण सिंह जी। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके रिव्यू जरूर 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 बताइए। योर आइडिया ऑफ टीचिंग इज ग्रेट फॉर मी, थैंक यू परवीन, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ स्पेशल होटल यू स्टेड इन। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू सो मच। और भी हम चीजें करेंगे। कल हमने राइटिंग टास्क 1 टास्क 2 के ऊपर सेशन किया था, आज हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग की। कल का जो सेशन होगा या तो लिसनिंग के ऊपर होगा या होगा रीडिंग के ऊपर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कल का 6 बजे का सेशन आपको किस चीज के ऊपर चाहिए। दो ऑप्शंस है हमारे पास, क्योंकि कल हमने राइटिंग टास्क 1 पाई चार्ट किया था, टास्क 2 में हम डिस्कस बोथ व्यूज गिव योर ओपिनियन किया था। आज हमने स्पीकिंग के 5 क्यू कार्ड्स डिस्कस किए हैं। इसके बाद आप लिसनिंग की क्लास चाहते हो या रीडिंग की क्लास चाहते हो, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। जो 5 सबसे पहले 5 कमेंट्स आएंगे या 10 कमेंट आएंगे, उसमें से जो भी सबसे ज्यादा लोगों ने डिमांड किया होगा उसी की क्लास हम लगाएंगे। लिसनिंग, रीडिंग, रीडिंग हाउ टू लॉन्ग आंसर गिवन पार्ट 3, उसके बारे में बात करेंगे। एक अलग सेशन रखेंगे पार्ट 3 के ऊपर, फॉलो अप क्वेश्चंस के ऊपर। रीडिंग ओके, राजदीप का रीडिंग, दर्शन रीडिंग ओके, काश तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैसी आइडिया आएगा ड्यूरिंग द एग्जाम। लिसनिंग गुरप्रीत कौर, राहुल शर्मा रीडिंग, गामोट रीडिंग ओके, परमिंदर कौर सेज रीडिंग, जस कौर सेज रीडिंग, वेरी गुड ओके। इस तरीके से अगर आप एक्टिव रहोगे सेशन में तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू एंड मी बोथ। वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन इंटरेक्ट। बेसिकली ये चीज सीख लेना, इंटरेक्शन मेक्स इट परफेक्ट। इंटरेक्शन किसी भी चीज को बढ़िया करके बताती है, इंटरेक्शन हमेशा आपको इंप्रूव करती है। सो इफ यू वांट टू इंप्रूव, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो। मेरा नंबर मैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको मेरा कांटेक्ट चाहिए होता है, सवाल पूछने जो भी आपने, वो सवाल आप पूछ सकते हो। हमारे वीजा विचार प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसको भी जरूर देखना, क्योंकि वो सवाल आप जो भी होंगे आपके वीजा विचार में हम आंसर करेंगे, स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना के आंसर करेंगे। ठीक है, लिसनिंग ओके। सो आई थिंक ज्यादा डिमांड है रीडिंग की, तो कल हम ट्राई करेंगे कि हम कल आपके लिए रीडिंग का सेशन लेके आए। शाम को 6 बजे आपने रेडी रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है आज वाली को, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आके जुड़ सके। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8230044400। इस नंबर को मैं पिन कर देता हूं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कोई चीज सीखना चाहते हो, अगर आप मोगा से हो, धर्मकोट से हो, या आसपास के किसी भी एरिया से और आइल्स करना चाहते हो, कैन ऑलवेज कम टू योर एजुकेशन एंड डू योर आइल्स टेस्ट वेरी इजीली। हर रोज शाम को 6 बजे वी आर गोइंग टू बी लाइव विद यू एंड वी आर गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। So kindly like the video, share the video। चलते हैं towards the last Q card of the day and फिर इस वीडियो को आज हम end करेंगे। Here we go. Describe a special hotel you stayed in. Describe a special hotel
you stayed in, किसी स्पेशल होटल की बात करिए जहां पे आपने स्टे किया हो. So we have to talk about a hotel where we have stayed or you have stayed, right? All right, I'll start speaking, right? तो मैं आपको बोल के दिखाता हूँ. हर बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको मेरा जो क्यू कार्ड बोला हुआ आपको कैसे लगा, और आपको अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, अगर बुरा लगा तो क्यों बुरा लगा. क्योंकि अच्छा लगा तो ये चीज मुझे इंस्पायर करेगी, और अगर बुरा लगा तो ये चीज मुझे इंस्पायर करेगी कि मैं उस चीज को इंप्रूव करूंगा. क्योंकि इंसान हूं, हर बंदा इंप्रूवमेंट की अपनी स्पेस लेके चलता है. मैं तो लेके चलता हूँ, आप लेके चलते हो नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, दैट यू शुड टेक कीप अ स्पेस. सीखने की स्पेस हमेशा रखनी चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ, चाहे आप कहाँ पे पहुंच जाओ. सो आई एम गोइंग टू स्पीक दिस क्यू कार्ड. मैं इस क्यू कार्ड को बोलूंगा, आपने ध्यान से सुनना है क्या टॉपिक है, क्या क्या चीजें उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं. बड़े कौन लास्ट क्यू कार्ड है आज का. थैंक यू सो मच समनप्रीत. आई एम गुड मन. तो आपने पूरा ध्यान से क्यू कार्ड को सुनना है और उसका मैं आंसर करूंगा, एंड देन आप उसमें से चीजें सीख पाओगे. डिस्क्राइब अ स्पेशल होटल यू स्टेड इन, एंड दिस इज माय आंसर. Hotels are home away from home, depending on the hospitality. Staying at a hotel is a pleasant experience, having people waiting on you while you do nothing. Also, different hotels have different things to offer. I will be talking about my experience staying at one of the prestigious hotels in Mumbai. For 3 days during a business conference, it was truly a home away from home. I went to my conference, which required me to lodge in a hotel. After the conference, I went home. It was a wonderful experience. It was a very nice hotel. All the staff were very polite and helpful. The comfortability level was top notch. The hospitality level was also high. A large parking area was there. Also, there is a park for walking if someone likes it. There were several security guards which ensured the security of the visitors and stairs, which made the meeting feel very safe. I was feeling safe even though I was very far away from a house. I felt like I was in a place or a palace. Everywhere I went, there was always someone to answer my needs. As a guest, you are entitled to a free massage, which I took and felt very refreshed. There are different types of hotel out there, and here you won't miss leaving your home, and you will get top notch hospitality. If you go anywhere, anytime, choose a hotel that feels like home, that treats you like home, that makes you feel like home. That is the end. दैट इज द एंड ऑफ माई क्यू कार्ड. आई होप यू लाइक दिस क्यू कार्ड. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. लास्ट क्यू कार्ड था आज का. इफ यू लाइक द क्यू कार्ड, इफ यू लाइक द वे आई स्पीक, मुझे जरूर बताना. इफ यू डू नॉट लाइक, ये भी मुझे जरूर बताना. बिफोर वी एंड दिस लाइव वीडियो, मैं 5 मिनट का स्लॉट रखूंगा, 2 मिनट का, 3 मिनट का, जब तक भी आप मेरे से सवाल पूछोगे. सो आस्क मी क्वेश्चन, जितने भी सवाल आप पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच समनप्रीत. जितने भी सवाल आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सवाल जरूर पूछिए. मैं हर बच्चे का आंसर करने की कोशिश करूंगा. थैंक यू राहुल, थैंक यू मन्ना, thank you, Saurabh Bhardwaj. Thank you, Praveen. Thank you so much. Thank you, Jaskar. Thank you. Thank you, Rajdeep. So nice of you guys. Thank you so much for everyone who's commenting and giving their reviews on the cue card. And I'll speak more cue cards in upcoming videos. And I'll also teach you reading tomorrow. That's what I wish to do. Thank you, Gurpit Kaur. No worries, Pavan Kaur. All you need to do is to practice more. I think I have already told you, if you want to practice, my number is there. You can always book a speaking session with our professional teachers. Yeah, sure, Rahul. If you stay with us on this channel, and we are going to do that for sure. सर जो रीडिंग करवाया करोगे, रीडिंग नेम भी लिख दिया करो, सर्च करके मिल जाओ. ओके श्योर, नो वरीज, आई डू दैट. आई ट्राई टू डू दैट फॉर ऑल द रीडिंग, स्पेशली द कैम्ब्रिज वंस, कि मैं उनके लिए जरूर कर पाऊँ, सो दैट वी कैन. एनी अदर क्वेश्चंस पीपल, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑन पार्ट 3 हम एक डिफरेंट सेशन जरूर करेंगे, फॉलोअप्स को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे बोलना है. Thank you, Parminder Kaur. Thank you so much. Any other questions, people? If you have any questions, kindly ask me in the comment section before we end this live video, because I have things to do, have purposes to do. I have uh,
miles to go before I sleep. So kindly comment and मुझे बताना कि क्या हम इस लाइव सेशन को एंड कर सकते हैं। 1 मंथ बाद पेपर है सर मेरा IELTS का। वेरी गुड पवन कौर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपके अच्छे-अच्छे स्कोर आएँ एंड आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। माय ड्यूटी इज़ टू ऑफर यू गुड लैंग्वेज स्किल्स, माय ड्यूटी इज़ टू ऑफर यू गुड एजुकेशन एंड आपको अच्छी कंसल्टेंसी सर्विसेज देना है रिलेटेड टू इमिग्रेशन, IELTS और व्हाटएवर। सो आई एम डूइंग दैट, आई विल बी डूइंग दैट फॉरएवर and till then I can take leave from you. I'll take leave from you now and I'll see you tomorrow. कल आपको शाम को 6 बजे मिलेंगे विद रीडिंग सेशन होगा कल को दोस्तों। बी रेडी, बड़ी अच्छे से करेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़े आनंद से करेंगे। एक एक डिटेल को, एक एक अक्षर को खोल के रख दूंगा कल आपके सामने, कैसे रीडिंग को करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या टिप्स ट्रिक्स, कैसे सॉल्व करते हैं, आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। देन वी विल फिगर आउट कि कैसे आपके बैंड स्कोर नहीं आते। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपके बैंड स्कोर ना आए अगर आप ध्यान से, अगर अच्छे से मन लगा के आप पढ़ाई करो। सी यू टुमारो 6 PM, नहीं तो मिलेंगे यूएल एजुकेशन में। बाय बाय।